एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं शाहिद सिद्दीकी इस मुल्क के, तो उनके हौसला अफजाई करने के लिए जब उनकी किताब रिलीज हुई दिल्ली में तो मैं गया था। वहाँ फारूक अब्दुल्ला साहब, सलमान खुर्शीद साहब और रविशंकर प्रसाद, ऐसे शशि तरूर सब मौजूद थे। तो मैं समझा कि दक्षिण भारत साउथ इंडिया में भी इनकी किताब का रिलीज का जलसा रखा जाए। इसके लिए मैं तमाम हर हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, जैन, सिख सब जमातों को यहाँ जमा के जलसा किया। मैं उन सबका सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे एक फ़ोन पर कॉल पर लबैक कहते हुए इतनी बड़ी सी तादाद में आए, और उनका शुक्रगुजार हूँ। ऐसे शख्सियत जो हैं शाहिद सिद्दीकी जैसे, इनकी हिम्मत देना चाहिए, इनको क़ुव्वत देना चाहिए, ऐसी ताकत हो। किताब जो है आई विटनेस इंडिया फ्रॉम नेहरू टू नरेंद्र मोदी, एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये किताब मैंने अमेज़ॉन से मंगा कर आधी किताब पढ़ी है। तो इसमें उन्होंने जो है हर दौर का, हर हिंदुस्तान की सियासी तारीख का जो है बहुत ही अच्छी तरीके से सहाफ़ी की तरीके से तज्ज़िया किया है और बहुत ही अच्छी बातें बताई हैं। यानी 1960 और 1965 की जंगें और उसके बाद इंदिरा गांधी का ज़माना, इमरजेंसी और उसके बाद फिर यानी नरेंद्र मोदी के आने तक जो जो हालात हिंदुस्तान की सियासी तारीख में गुजरे हैं, उन्होंने उसको बहुत ही बेबाकी और जुर्रत के साथ बयान किया है। और ये जो है ऐसा लगता है कि ये किताब उनका एक बयानिया है और बयानिया के साथ साथ जो हिंदुस्तान की तारीख की सियासी तारीख का एक आईना है। इससे क्या मैसेज होता है मैडम? इससे ये मैसेज होता है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है सियासी तारीख को पढ़ सके और समझ सके कि और उन्होंने इस किताब में हिंदुस्तान की मुसलमानों की जज्बात का भी इजहार किया है कि इंसानी जज्बात क्या थे, एहसासात क्या थे, फसादात के ज़माने में किस तरह से मुसलमानों के साथ बर्ताव किया गया था। तमाम बातें बिल्कुल उन्होंने खुल कर कही हैं, बहुत ही बेबाकी से कही है और बहुत ही ज़रूरतमंदाना तरीके से कही है। तो एक बहुत ही अच्छी किताब है, बल्कि हम समझते हैं कि तमाम नौजवान नस्ल के लोगों को ये किताब पढ़नी चाहिए ताकि वो हिंदुस्तान की सियासी तारीख से वाकिफ़ हो सके। आज जो शाहिद सिद्दीकी साहब की बुक जो आई विटनेस थी, वो एक पॉलिटिकल नरेशन करके बोल सकते हैं, और जो ये पहले प्रधानमंत्री से लेके अब तक के जो इवेंट्स हैं वो उनकी बुक में समराइज़ किए हैं। और ये सीजन जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन रह चुके हैं, और मैं शाहिद सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि इतनी अच्छी तरह ये बुक में जो इवेंट्स 1960 से लेके अब तक जो हुए हैं वो नरेट किए हैं और समराइज किए हैं। is also an author of our Hindu Rashtra and Price of Modi Years. देखिए, वो हर दौर का एक एक नरेशन किए हैं। तो जैसा हिंदुस्तान बदलता गया वो भी उनके नरेशन और जो जो चैलेंजेस थे वो बहुत ही अच्छी तरह उनके बुक में लिखे हैं। और जो पास में उनकी जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस इन लीडरों के साथ थी वो अच्छा नरेट किए हैं। और जो आने वाला, जो अब की जनरेशन है और आने वाली जनरेशन को ये बुक पढ़नी चाहिए। और जो जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रहता है और जो करंट अफेयर्स का इंटरेस्ट रहता है, ये बुक पढ़नी चाहिए। फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि शाहिद सिद्दीकी साहब ऑलवेज जर्नलिस्ट फर्स्ट रह चुके हैं, इसीलिए कुछ सवाल पूछे हैं और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी सवाल पूछे। Mr. Shahid Siddiqui is a senior most journalist of India and is a politician also. The book what he has written, Eyewitness, means from the Prime Minister Jawaharlal Nehru's tenure till Narendra Modi Saab existing tenure, with whoever the Prime Minister has interacted with them. So he has expressed his experience, his views in that book. So today was the release of his book in Bangalore, organized by Janab Roshan Baig Sahab, former minister, and his son Mr. Roshan Baig Sahab. So book, we should see the contents. It is his views, author's views, how he interacted with the Prime Ministers, previous minister, and the existing present Prime Minister. He has expressed his views. So we should go through the book, and it's a nice thing to be there in the history that how the Prime Minister have worked, functioned previously and presently, how they are doing, and what best they have done for the country. It's a good book. Thank you very much. What is the main aim of this book and minorities? No, it's not minorities or majority. He has written the book Eyewitness, and he is witnessing with whom he has interacted. What he has interacted with the Prime Ministers, he is witnessing that. That's what he has mentioned in the book. देखिए, ये जो किताब रिलीज हुई आई विटनेस बोल के, ये जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब दिल्ली में नई दुनिया के एडिटर वगैरह हैं।
लिहाजा उनका नज़रिया जो है वो शुरू से अब तक के सारे प्राइम मिनिस्टरों के बारे में उनका नज़रिया क्या था और किस किस ने क्या क्या किया उसके बारे में उन्होंने एक किताब के ज़रिए मालूम कराने की कोशिश की है। उस किताब का नाम है आई विटनेस, जिसको इसके ज़रिए उन्होंने सारे प्राइम मिनिस्टर्स तकरीबन जवाहरलाल नेहरू से अब तक के सारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में उन्होंने जिस किसी से मुलाकात की और क्या क्या बातें की और उन्होंने क्या पॉलिसियाँ इख्तियार की उसके बारे में उनके ख्यालात का इजहार करने के लिए किताब लिखी है। लिहाजा उसका आज इनाग्रेशन था, इजराई थी किताब की। जनाब रोशन बेग साहब उसका पूरा इंतज़ाम और उन्होंने और उनके फर्जंद रोमान बेग ने इसका इंतज़ाम किया था यहाँ रेडिसन होटल में बेंगलोर में। लिहाजा वो पूरा इनाग्रेशन अटेंड करके ये किताब सब लोग ख़रीद के जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें यहाँ कर्नाटक की जमा हुई थी। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब रोशन बेग साहब को इतना अच्छा इंतज़ाम इजराई का किताब की इजराई का करने के लिए। शुक्रिया। The Indian monopolies. When the Congress party was virtually in the grip of the syndicate, conservatives, anti-progressive, here was a man who could be in Congress and raise his voice against the monopoly trade practices and was very successful in getting MRTPC. It can't lose sight of. Then the second Chandrasekhar is. Many of the political organizations now have ceased to be democratic. We have remained democratic on paper. It is very costly to be really democratic in the parties. It was way back in 72. The organizational elections of the Congress party took place in the famous Bidhan Nagar ACC, Lake Nagar ACC. Madam Indira Gandhi was at the peak. The practice used to be, they would authorize her to select the members of the Congress Working Committee, which is the highest policy making body. But here was a peculiar situation. Chandrasekhar said, nothing doing, I am filing my nomination. Oh my God, I was present in Bidhalnagar. We had gone there. And that man was walking, asking for votes to be cast in his favor to be elected to Congress Working Committee. It looked he had become more popular, powerful and attractive than Mrs. Indira Gandhi in Congress Party. And the story goes on. When Jayaprakash Narayan decides to come to streets for the sake of country, here was a man who was the member of the Congress Working Committee, extends his moral support to Jayaprakash Narayan, decides to oppose emergency and go to jail. Number 2 ends there. A part of it also gets extended to his Padayatra, which was something remarkable. Whatever you may say today, after all, he was a human being. He thought he was being sidelined. It's a duty, and I think a lot of us should do that. And I think it's happening now, especially some from the media, some from politics. They should write, because how does a historian study history? आज अगर आप मुगल्स की हिस्ट्री पढ़ पाते हैं, one of the reasons is the Tuske Bapri, which was written by Babar's autobiography. Because there are very few kings in the world who have written their autobiography in their lifetime, and Babar was one of them. And you get so much information from that. Later on, Akbarnama and others were more of a hash work of the Darbari people, but Tuske Babri was a genuine
memoir. And the last thing is that one mistake a lot of my analysts and friends are making is that I have left out a lot of things in my book. Yes, this is not a history of last 77 years. I have not written the history because I can't write the history of 77 years and everything that happened. This is my memoirs of where I was involved, where I saw things from close quarters, or I knew people who were look at things at close quarters, and I have taken those things which I feel I could add something to history, to the understanding of history, where I could add something to the understanding of people, great leaders. So I have only taken up those events. So a lot of things you will find missing, and I must have made a lot, and I have made a lot of mistakes. There will be mistakes in the book, because this book I wrote in 9 years. I started writing in 2016. Then after first 2-3 chapters, when I came to political part, I was a bit nervous. Anxiety was there, nervousness was there. How much should I write? How many more enemies should I make? I stopped, mental block ho gaya, stopped writing. For next 4 years, 5 years, I did not write. Then again, I started writing, I think somewhere in during the COVID period. Again, it stopped. But in so it is written in, different phases. So there are somewhere you will find it's not gelling with certain parts. But continuity is there. You will find, and I have made because India has evolved, India has changed, Indian constitution, people talk of constitution and the republic as if it's static. It is not. It has been changing constantly, and personalities, although I believe in the Marxist idea that it is the circumstances which make the individuals, but I also believe in dialectics, where individuals do influence politics and the ideals of a time. So change. तो ये कहने लगे रप्पा दे इट्कोड़प्पा तो वो उस दिन ऐसा घुस गए, इतना परेशान, ऐसा मारा मारी शुरू हुई. वो थोड़ा परेशान हो गए कि ये कुर्ता पजामा कहाँ गया इसका. ಇವನೆಲ್ಲ ಕಣ ಎಲ್ಲ ಸಾಬಣ್ಣ ನೋಡಿ ಇವನು ಸಾಬಣ್ಣ ನಮಾವಣ लुंगी पिछे ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. बाय दैट टाइम वहाँ से फरिश्ते की तरह एक जीप आने लगी. ये लोग भाग गए. लोग समझे कि पुलिस जीप है. वो पुलिस की जीप नहीं थी, रेशमी इलाके जीप, सेरिकल्चर डिपार्टमेंट जीप. अब फिल्मों में जैसा पुलिस आखिर में आती है वैसा पुलिस आखिर में आई. तो वहाँ से लाकर हमको बोरिंग अस्पताल में डाले. 8 दिन हम थे. मेरे से ज़्यादा इनको चोट लगी थी, और थोड़ा चोट ज़्यादा लगते रमेश. जनाब शाहिद सिद्दीकी, मैं उनका एडमायरर इनसे मिलने से पहले हूँ. आई वॉज इज एडमायरर बिफोर आई मेट हिम. मिस्टर फारूक अब्दुल्ला इंट्रोड्यूस मी टू हिम. फारूक अब्दुल्ला साहब टोल्ड मी व्हेन आई वाज इन दिल्ली. मैंने जब उनको फ़ोन किया कि तो उन्होंने कहा शाम में आ जाओ चाय पीते हैं. वो शाहिद सिद्दीकी नई दुनिया को बुलाएंगे. मैं समझा शाहिद सिद्दीकी मीन्स कोई दाढ़ी वाला, लंबा शेरवानी, ये. अब वहाँ देखता हूँ बड़ा रंगीन मिजाज का, बड़ा स्टाइल, शाहिद सिद्दीकी बड़ा सिगरेट पीते हैं. उस दिन से हमारी दोस्ती हो गई. अब दूसरे दिन हमने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे, डेविड लोनी सर. अरे देखो मैं वो चीफ मिनिस्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता नहीं हूँ. ठीक है आप बोल देते तो आ जाता हूँ. फिर वहाँ आए जिस स्टाइल से टिपिकल उर्दू जर्नलिस्ट की तरह वो माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, द सेकेंड लैंग्वेज बैक ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज सेकेंड ऑफ फ्रेंच स्टेट्स. नहीं, ही जस्ट raised questions on national issues, which Ramakrishna Hegde was also impressed. I was also impressed. एक उर्दू जर्नलिस्ट, क्या nationalistic views है. बहरहाल, before meeting him, why I was impressed with him was he used to fight fundamentalists among Muslims also. When Shahi Imam in this country said कि in reply to Shiv Sena, we must form Adam Sena. When Shahi Imam said नहीं Adam Sena बनाएंगे, तो शाहिद सिद्दीकी said nothing doing. और अखबार में इन्होंने खूब लिखा कि अगे शाही इमाम. तो अब उस वक्त मिला नहीं था मैं शाहिद सिद्दीकी को. मैं उस वक्त से एडमायरर हुआ
here is a journalist who is fighting the fundamental elements among our community also. तो मैं वहाँ से हमारी दोस्ती हुई, सफ़र चलता रहा। क़िस्सा मुख्तसर एक बड़ी अच्छी किताब इनके फंक्शन में, मैं बुक रिलीज फंक्शन में दिल्ली में भी गया था, वेयर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिलीज द बुक, शशि तरूर member of parliament was there, and Salman Khurshid, former Union Law Minister, Sanjay Singh, member of parliament from AAP party, Ravi Shankar Prasad, former Union Minister from the BJP party. They were all there, and it was like this gathering. It was also a gathering of the cross sections of the society. मैं भी ये गैदरिंग में चाहता था कि पढ़े लिखे लोग आएँ, सोशली अवेयर हों, जिससे सियासी शऊर है, ऐसे ही लोग आएँ पॉलिटिकली अवेयरनेस के लिए, और एक क्रॉस सेक्शन सब कम्युनिटीज़ के लोग हों, जिसमें डॉक्टर्स भी हों, इंजीनियर्स भी हों, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के। आई एम हैप्पी कि मेरे एक फ़ोन कॉल पे रिस्पॉन्ड करते हुए आप इतनी तादाद में आए हैं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। इन चंद अल्फाज के साथ मैं फिर आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए, शाहिद सिद्दीकी साहब का शुक्रिया अदा करते हुए कि उन्होंने ये मौका दिया सर आपको ये इवेंट होस्ट करने का, और मेरे एक बहुत अजीज ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.